I, Vibha Sharma from Government College of Education, and my friend Rehana Pathan is going to teach you the chapter maths chapter bank and simple interest. So children, today we are going to do the practice set 41. So children, now today we are going today half of the chapter I am going to teach you, and my friend Rehana Pathan teacher, she will explain you rest of the chapter. Okay, so let's begin children. Okay, so children, before going ahead, last year also we have studied this simple interest, right? So can you all tell me what is interest? Yes, what is interest? Interest is money paid or earned फॉर द यूज़ ऑफ मनी. जैसे कि हम क्या करते हैं, हम लोग जब बैंक से लोन लेते, ठीक है, तो हम लोन लेने के बाद क्या होता है, बैंक हमको एक पैसा देती है. कुछ पैसा देने के बाद बैंक क्या बोलती है कि ठीक है, मैं आपको ये पैसा दे रहे मतलब मैं आपको ये पैसा दे रहा हूँ, बट आप अगर 1 साल के बाद मुझे रिटर्न करोगे तो उसके लिए आप उसके आपने वो पैसा मेरा 1 साल तक यूज़ किया, उसके लिए आप मुझे कुछ तो एक अमाउंट दोगे. तो जो अमाउंट होता है जो हम एक्स्ट्रा बैंक को पे करते हैं अपार्ट फ्रॉम वो जो मैंने लोन निकाला है, उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं. तो इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इज नथिंग बट द मनी पेड और अर्न फॉर द यूज़ ऑफ मनी. आप मेरा पैसा यूज़ कर रहे हो, करके वो यूज़ करने के लिए आपको वो रेंटल देना. जैसे कि आपको पता है रेंट बेसिस पे हम लोग कैसे कार आजकल यूज़ करते हैं, तो अब कार अगर हम उनका यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी आर गिविंग देम सर्टेन रेंट, राइट. हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग रेंट देते हैं. सो उसी तरीके से जब हम किसी से पैसा लेते हैं या किसी को हम अपना पैसा देते हैं तो उसे यूज़ करने के लिए वो एक अपने को अमाउंट पेड करते हैं. जैसे कि रेंट हम पे कैसे करते हैं, अभी आपको पता है कुछ लोग रेंटल हाउस में रहते हैं, हम उनका घर में रह रहे करके हम उनको रेंट पे करें, मतलब वी आर यूजिंग दी हाउस, सो वी आर पेइंग द रेंट. सिमिलरली मनी को भी यूज़ करने के लिए हमें उसके लिए मनी पे करना पड़ता है. तो जो अमाउंट होता है जो हम एक्स्ट्रा पे करते हैं उसे हम कहते हैं interest. So what is interest children? Interest is nothing but the money paid or earned for the use of money. Now what is this principal? Principal क्या होता है? The principal is the amount of money borrowed or invested. मतलब amount of money borrowed मतलब मैंने अगर किसी से लिया है, बैंक से अगर मैंने पैसे लिए तो amount of money that I borrowed, और कुछ पैसा अगर मैंने किसी को दिया है. सो जो अमाउंट है, फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 आपको दे दिया, तो क्या हुआ, ये 10,000 रुपीज़ क्या है, ये है प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक है, सो क्या हुआ, अमाउंट ऑफ मनी borrowed और इन्वेस्टेड एट पर्टिकुलर अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव टेकन 10,000 रुपीज़. सो 10,000 रुपीज़ क्या है, इट इज़ अ प्रिंसिपल. नाउ व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? द मनी पेड और अर्नड ओनली ऑन द प्रिंसिपल. मतलब ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जैसे कि यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 10,000. तो ये 10,000 अगर मैंने किसी को दिया है तो वो जो 10,000 यूज़ करेगा, मेरा मनी जो यूज़ करेगा, वो मनी के ऊपर जो स्पेसिफिकली ये जो 10,000 है इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा उसे हम कहते हैं simple interest. So children, today we are going to learn about the simple interest. Okay, so before moving ahead, let's see the formula of simple interest. So children, here SI stand for simple interest. So what is the formula for simple interest? P into R into T upon 100. So what is this P stand for? P means principal amount, जो कि मेन अभी हमने एग्जाम्पल में कितना लिया था, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000. तो P क्या है, ये है 10,000. R स्टैंड फॉर रेट, मतलब मैं कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनको दे रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने 8% से पैसा किसी को यूज़ करने दिया है. T स्टैंड फॉर टाइम, टाइम मतलब कितने सालों, कितने टाइम के लिए वो यूज़ कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैंने उनको 1 ईयर के लिए वो पैसा दिया है. सो हम कैसा सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे? P मीन्स व्हाट, 10,000. सो वी विल राइट 10,000 मल्टीप्लाई बाय R मीन्स 8. सो 10,000 इंटू R 8 हो गया, तो ये कितना हो गया, 10,000, ये हो गया 8,000. ठीक है, नाउ 8,000 इंटू T स्टैंड फॉर टाइम. सो टाइम इज़ 1. सो कितना हो गया, 1 हो गया. ये तो 8,000 आएगा.
So here what we got 8,000 divided by 100. So 100 means this zero cut, this zero cut. So कितना हम लोगों ने इनको सिंपल इंटरेस्ट पे किया? इन 1 year we have paid, sorry, this should be 80,000, not 8,000. It should be 80,000. Okay. So how much interest we paid? We paid 800 rupees. Clear? So इसी तरीके से आपको with the help of this formula हमें सारे सम सॉल्व करने. ओके. सो चलो हम लोग अपना एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं. सो चिल्ड्रन एवरीवन प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक. प्रैक्टिस सेट 41. सब लोग ओपन करो क्विकली चिल्ड्रन. सब लोग अपना प्रैक्टिस सेट 41 ओपन करो. ओके. सो इसमें हमारा फर्स्ट सम है, इफ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज इज 340 रुपीज. सो इंटरेस्ट यहाँ पे कितना दिया है? 340 रुपीज फॉर 2 years. सो हमारा टाइम फ्रेम क्या है? कितना हमारा कितने टाइम के लिए दिया है हमने? 2 years के लिए. द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी डैश. सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द आर, means rate of interest. What is given children? See here what is given. I have written here. P means principal amount. What was the principal amount? Principal amount is 1700. ठीक है. And it is given for how many years? What is the tenure? Tenure is 2 years. And how much interest we earn? We earn 340 rupees. So what we need to find out? We need to find out rate. So first what we will do children? First we will write the formula. So what is the formula? Formula is I. I stand for interest is equal to P into R into T upon 100. This formula you have to write. Now what we will do? Whatever given that we will substitute the value. वो values हम लोग यहाँ पे substitute करेंगे. So interest कितना दिया है? 340. So 340 is equal to what is the principal amount given here? 1700. 1700 into R. R is given? No, it's not given in the question. We need to find out. So we will write R as it is, multiply by 2, divided by 100. Okay. So after writing this step, what we will do here? We will just cut these zeros. ऊपर का 2 0, नीचे का 2 0 कट करना है आपको. ठीक है. सो ये आपका कट करने के बाद what you will get? See here, this 2 0 I cut and this 2 0. What we will get? We will get 340 is equal to 17 into R into 2. Now what we need to find out? We need to find out this R. So what we will do? We will take this 17 into 2 on the left hand side. Left में हमको लेना है, मतलब from this side we will take. So how we will write after taking this side? How we will take this side? We will write R is equal to 340 upon 17 into 2. Understood? So हमको इस तरह से लिखना है 340 upon this. See, like this way we have to write. After writing this, what we will do? 17 2s are 34. So we will write 34. So now in the table of 34, how we will calculate this? This is 34. This is 340. Okay. So 34. First we will take, first we will take 34 ones are. 34 ones are. We will write 34. Then what we will get the answer? 0, and here is 0. So 34 zeros are 0. So remainder is 0. So what answer? We got the answer 10. So in the option it is given 12, 15, 4 and 10. So option number 4 is the correct option. So children, remaining sum of the same type, what you need to do? You need to solve all the sums by yourself. And for the remaining sums, Rehana teacher will help. Rehana teacher will explain you rest of these sums. Okay. So Rehana teacher, now over to you. Thank you, Vibha ma'am. We'll move on to some more sums. Here again, principal, that is P is not given to us. So a question, you can see a question mark here. Rate is 2.5 years. So you have to convert 2.5 years into a proper fraction. You will get 2 2s are 4 plus 1. It will get 5 upon 2. Time period is given as 5 years. Interest is given as 2,400 and amount you have to calculate. Okay, our basic formula we have to apply, that is I is equal to P into R into
T. Fine, we'll put the values. What's the value of interest? Interest is 2400. Principal we have to find out. Now here the fraction is 5 upon 2. So what you have to do? 5 you have to write in the numerator and 2 you have to write in the denominator. And again the time period is 5 years. Right? So we have already put the values. Now we have to solve it further. 5 5s are 25. While one value is on the left hand side and other values are on right hand side, what you have to do? What you have to find out? You have to put it on left hand side, and all the values which you have to take them on right hand side. But while doing so, what happens? All the numerators will come in the denominator part and the denominators will come on the numerator part. They will you will have to take the reciprocal. This you have to remember. Okay, 2400 into 100 into 2 divided by 25. Okay, you can solve it. 25 ones are 25 and 25 fours are it is 100. Now 4 twos are you are getting as 8. So we'll solve 2400 multiply by 8. 8 zeros are 0, 8 zeros are 0, 8 for the 32, you get 3 up. 8 twos are 16, 17, 18, 19. Okay. What you got as principal? You got as 19,200. Now what is amount? Amount is principal plus interest. Amount is our principal plus interest. So principal we have received as 19,200 plus we have to add interest to it. This is 2,400. While adding we'll get as 21,600. So our value of amount is 21,600. Hope you all have understood this sum. Simple basic formula you have to apply in all the sums. Okay, move on further. This is small revision sum. Again a very simple one. Just if you remember the formula, you can solve everything. Okay, here principal is given as 4,200. Rate is given as 7% per annum. Time is 3 years. Interest you don't know and amount you don't know. Okay. Now once again I'll explain you the concept of everything. See, what is principal? The amount which you deposit in the bank or which you borrow from the bank. That is called the principal. What is rate? The extra amount which you pay on the principal or which you receive on the principal. अगर आपने कुछ डिपॉजिट किया है तो आपको क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है? आपने अगर 100 रुपीज़ दिए हो तो उसके ऊपर आपको क्या एक्स्ट्रा बैंक दे रहा है, क्योंकि आपने उनके अपना पैसा उन्हें यूज़ करने दिया है. ठीक है. दैट एक्स्ट्रा अमाउंट विच यू रिसीव्ड is in the form of a percentage. That is called your rate. Time is how much time you have deposited. 3 years, 5 years, 10 years. That is your time. And interest is the amount, actual amount. अगर 100 रुपये पे आपको 7% interest if you are getting, so it will be 7 rupees. The exact amount will be your interest. And amount क्या चीज़ है अभी? अगर आपने 100 rupees deposit किया, I'll explain in simple terms. If you deposit 100 at, okay, we'll take 200. It will be more confusing otherwise. If you have deposit 200 plus for 3 years, ठीक है, तो ये 200 क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रिंसिपल. 3 years के लिए किया तो 3 years हो गया आपका टाइम. This 3 year will be your time. And if the bank is giving you, in this 200, if the bank is giving you 2% interest, so 2% of 200 will be 4 rupees. So this percentage, जो भी rate है उसके आगे percent रहता है, तो this will be your rate. And this rupees 4, it will be your interest. ठीक है. तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या रहेगा हमारा? व्हाट विल रिसीव इज आवर अमाउंट. दिस 200 प्लस 4 रुपीज़, दैट इज 2004. तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट शुड ऑल बी क्लियर इन योर माइंड. विल सॉल्व दिस सम. Here principal is given as 4,400. Rate is 7% per annum. Time is 3 years. Interest you have to find out. Amount you have to find out.
use our formula. I is equal to P into R into T upon 100. Okay, everything is given, so it's simple to find. Principal is 4200, rate is 7, and time period is 3 years. 0 0 cut, you have to multiply it. 42 into 7, when you multiply, what you are getting? 7 to the 14, 4 1 up, 1 minute. 7 4 is 28 plus 1, 29. 294 into 3, if you multiply, what you get? 3 4 is 12, 2 1 up, 327 plus 1 28, 8 2 up, 3 to the 6 7 8, it is 882. Okay, you are finding out amount. What you have to do, you have to add principal plus interest. While adding, you will get 5082. Understood? This small homework, a very easy one. I hope you all will complete this. Okay, it was really nice meeting you all. Thank you.